नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध, आप सभी का द सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर सेफ। So, in today's video, actually, we are going to talk about the last almost 5-6 days left before Gate 2022, and what are the things that you must be very very careful about in this last 5-6 days. इसमें बहुत कुछ बदल सकता है, trust me. Do's and don'ts. I'm not saying कि without any preparation you can get 70 plus in last 5 days. That is absurd. But still, some things definitely are going to change, and you have to keep in mind. आपके मार्क्स 70 से 30 हो सकता है इस 5 दिन में, तो ध्यान रखना इस बातों को. So let's understand it. First thing is your mock tests. Now let's understand. Many people ask me this question that whether I should appear for the mock test or not. If you are feeling this particular thing that yes, I'm feeling motivated, even if suppose the scores are getting low, no problem sir, I'm getting exposed to more questions, new questions, I'm increasing my inventory, मेरा जो question का stock है वो बढ़ रहा है, नया question का, अच्छी बात है, right? That's nice. But if you are feeling, it actually varies from person to person, that's what I'm saying, demotivated after every mock test, then please stop it, trust me. Because in this 5-6 days it is really high time to keep yourself motivated, and if you are feeling demotivated then please stop. तो सर उपाय क्या है इसका? Sir, try to go for small quizzes, or sir at least the solved sessions where question discussion, most expected question, problem, something like that is happening. Suppose in my channel only I am every day coming live with mock test, most expected questions and all these things. हर रोज मैं लेके आ रहा हूं, तो आप वहां से डेफिनेटली एक अंदाजा लगा सकते हो क्वेश्चंस का, एंड यू कैन पैरेलली कीप अप योर प्रिपरेशन सो दैट सपोज बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड राइट नाउ. इफ यू आर फीलिंग डाउन ना, then don't continue that particular thing in order to magnify. Okay, the second thing is to form the habit actually to sit at a place for 3 hours. That's a very very important thing. बहुत सारे लोग नेग्लेक्ट करते हैं इस बात को. हम 3 घंटे एक जगह पे बैठे रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? कि हम पूरे एफिशिएंसी के साथ विद आवर फुल कंसेंट्रेशन, आई एम डिवोटिंग टू दिस, आई एम डिवोटिंग माई सेल्फ, माई कंसेंट्रेशन to the computer screen, to the laptop screen for this 3 hours. Very very important this thing. तो start forming that habit in case you haven't yet, please, right? जो कि सबसे ज़्यादा important चीज़ है वो कि जब आप mock test दे रहे हो या फिर question practice कर रहे हो, whatever, but that should be in the time. Say 9 to 12 is gate का time, तो gate का time के हिसाब से ही आपको करना है. 2 to 5 है तो 2 to 5 ही दो एग्जाम, right? Understanding whatever you are doing, question practice, so that आप उस 3 घंटे कुछ नहीं कर रहे हो और you are not going to do, you are not simply allowing yourself to do anything else except studies, questions, at least for this particular 5 days. Okay, be very very careful. कभी सर पूरे टाइम मॉक टेस्ट दो और एनालिसिस करूं? नहीं. सम टाइम सपोज इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सपोज सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू हैव मार्क्ड दैट दीज आर टफ, दिस आर समथिंग स्पेशल. Do that questions, previous year questions and solutions, तो मिल ही जाता है, right? Do those questions actually, very very important. That should be your time pass, not anything else, right? Be careful. And suppose if you are having an exam at 9 a.m, right? तो understand this particular thing. Okay sir, तो I have to get up at least 6 a.m, तो buffer एक टाइम रहना चाहिए and all these things. If suppose possible in this 5-6 days, if your center is located nearby, you can also pay a visit to the center and at least gather the information regarding what should be the mode of communication, mode of like transport, right, I would say, between your place and that particular examination center. एक बार आप अंदाजा लगा सकते हो, right? That's very very important. Okay. Third most important thing is to keep yourself very calm and composed for this 5 days. बहस वहस मत करो किसी के साथ भी नहीं, okay? किसी के साथ अगर बहस हो रहा है, suppose you are having a fight with somebody, just try to keep yourself calm. झगड़ा रोकने के लिए किसी एक को झुकना पड़ता है, राइट? आप झुको इस 5 दिन के लिए, फाइट मत करो किसी के साथ भी, whatever. ठीक है, आप बोल रहे हो, ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम. It's for your own interest. Okay, it's for your own interest, because trust me, a disturbed mind, right, makes actually a lot of mistakes. It can actually make you commute very much higher amount of mistakes. आप जो सोच भी नहीं सकते हो. In many cases actually negative marking
occurs just because of this. And you know the negative marking, how much harmful they are. It just drastically reduces the rank to what extent आप सोच भी नहीं सकते हो, right? So it's very very important to keep yourself calm and composed. कोई ज़रा मतलब बहस वहस करने की ज़रूरत नहीं है. Also, some people say, sir, should I talk to the friends and family and all these things in this? Yes, of course you can do. If you are feeling that by talking to some friends, say for 5-10 minutes, not more than that actually, not any long conversations, actually is giving you a boost for your preparation, filling you with some positive vibes, definitely you are welcome to do that. But suppose तुम ऐसे एक इंसान के साथ बात कर रहे हो जिनको ना आपकी परवाह है, ना आपके एग्जाम की परवाह है, उनके साथ कोई रिलेशन ही नहीं है इस चीज़ों का, राइट? एंड ही और शी इज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स एब्सोल्युटली विच इज नॉट not at par with what you are right now going through, then please don't waste your time. Okay, वो कितने भी अच्छे तुम्हारे दोस्त हो या ना हो, राइट? क्योंकि आपके साथ वो सिचुएशन समझने वाले कोई लोग, सपोज यू आर टॉकिंग विद पर्टिकुलर फ्रेंड हु इज ऑल्सो अपियरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन, राइट? जिनके साथ तुम्हारा अच्छा बॉन्डिंग है कि चलो कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक अच्छा माहौल बनता है, एक गुड हेल्दी कंपटीशन की माहौल भी बनता है. दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई बिलीव. सॉरी, जस्ट गॉट अ कॉल. Okay, so don't just read anything new. That is my next tip, right? Please don't read anything new in this particular 5-6 days, because suppose you are feeling like that, okay sir, I'm reading at the last moment something new, but actually it's replacing perhaps something which is already being stored. So be careful. Don't just sit and read for. Obviously, if you suppose come across a new question, okay, the solution of which, अरे यार ये तो मुझे पता नहीं था कुछ चीजें, from that you can read. Okay, but don't suppose, okay, fine sir, I did not read the water requirement chapter in irrigation engineering, let's start reading that chapter. No, absolutely not, right? Whatever new you are going to read, that is only going to be through your questions and nothing else. Okay, be careful. One of the very important things for these last 5 days is your food habit. Okay, वेज खाना, लाइट खाना एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये वेज, एंड ऑल्सो सम लाइट फूड एक्चुअली फॉर द अपकमिंग 5 days, एंड ऑल्सो कीपिंग योर सेल्फ हाइड्रेटेड. ओके, सफिशिएंटली हाइड्रेटेड एटलीस्ट. ऐसे नहीं कि मैं बहुत क्विक इंटरवल में आपको पानी पीने के लिए बोल रहा हूँ, ओके, बिकॉज एग्जाम के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? आई विल टॉक अबाउट द एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी इन अ सेपरेट वीडियो, एंड डोंट मिस दैट वीडियो ऑल्सो. एंड फॉर डेली सच कंटेंट्स, डेफिनेटली टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, otherwise you can't be able to participate in the mock test and all these things, and you are going to miss out a lot. So please go guys, definitely subscribe to that channel and share this video with all the other people, and do join my Telegram channel for daily class and quizzes, okay, and also the PDFs. The last but not the least, very important thing, that is to keep yourself motivated. I mean, how? Sir, in many of the occasions what I have seen, that in the last, that is the 11th hour basically, जिसको हम बोलते हैं, right, people are quitting their preparation. लोग छोड़ रहे प्रिपरेशन, मतलब लोग रहे अरे यार मुझसे शायद इस बार नहीं होगा, लेट्स प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट ईयर. प्लीज डोंट डू दिस. प्लीज जस्ट थिंक अबाउट दैट. येस, यू हैड पुट एफर्ट, वॉट एवर इज द स्केल ऑफ दैट एफर्ट, बट यू हैड पुट एफर्ट फॉर द लास्ट 1 year or 2 year. सो प्लीज डोंट लेट इट गो इन वेन. बहुत मेहनत आप कर चुके हो, तो प्लीज जस्ट डोंट लेट इट गो इन वेन. Think about yourself whenever you will feel demotivated. It's not any expectation, pressure I'm just applying on you people and all these things, but think about this particular thing, that yes, you have worked hard. Not only you, if there is an exam now, it's not only the exam for that person, it's the exam for all the people associated with it, the teachers, the family, सब लोग associated हुए. तो मैं बार बार बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि इतना एक्सपेक्टेशन प्रेशर आपके, नो, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि सबकी मेहनत जुड़ी हुई है. तो प्लीज एटलीस्ट डोंट क्विट. ओके, जस्ट गो टू द एग्जामिनेशन सेंटर, गिव योर बेस्ट, रेड द रिजल्ट्स, व्हाट एवर जो भी होगा वो तो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, गिव योर बेस्ट एक्चुअली whenever you will feel demotivated. देखो आज मेरा बर्थडे, राइट, तो मैं कहीं पे भी लाइक घूमने जा सकता था, पार्टी करने जा सकता था, all these things. What I have planned actually, making this video for you at the evening. In the evening actually, I'm planned for mock test from 7 PM, full length, full syllabus mock test and all these things. तो एटलीस्ट सोचना इस बात को. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग भी मत करो, ओके, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट appear for the examination for yourself, for everyone associated with you who are actually also working very very hard for you people.
तो फोड़ के आना है दोस्त, डेफिनेटली. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कीप योर सेल्फ कंपोज्ड. मेडिटेशन भी कर सकते हो, बहुत हेल्प करता है पढ़ाई से पहले. Okay, that's all for today, and definitely do join me live from 7 p.m. on the mock test, and I wish you all the best for that. Do subscribe to my channel in case you are new for sure, and do share this video, guys, and also do join my Telegram channel for daily PDFs links. This is Aniruddha signing off. Take care, guys. Thank you.